Hello everyone, welcome to the history class. I am Prativarani Barik, junior lecturer in history, Ravensa Junior College. Today I am going to discuss about the contributions of ancient Chinese civilization. In the previous class we have already discussed about the economic condition, the political condition and about the social condition of the Chinese people. So, in this class I am going to discuss about the contributions of Chinese civilization to the human civilization of the world. Here I will discuss about the development of science, technology and what are the developments during ancient period in China. The Chinese people, they have contributed to the world the scientific developments like the gunpowder, then then there are different developments in the field of science, literature, in the field of art, architecture, the Great Wall of China which shows their excellence in the field of art and architecture, and also their sculptural activities are reflected in the buildings and in different architectural monuments. So, in this class I am going to discuss about the contributions of Chinese civilization. So, the human civilization was greatly enriched by the contribution of ancient Chinese people. The Chinese contributed splendidly in the art of writing, the literature, in the field of science and technology and religion also. There are two important religious reformers like Confucius and Lao Tse, and they have reformed the Chinese society during that ancient period. And during the 6th century BC, there are several reform movements started in India and also in other parts of world. Here in China also there are religious reform movements which took place by the two important reformers like Lao Tse and Confucius. Mencius was also another reformer who also brought a lot of changes, in the drastic changes in society and also in the field of religion. So, there are so many socio religious reform movements which took place in 6th century BC in different parts of the world, and in China also they brought the change, they introduced morality in the society, and there was also several changes which organized the people to live a better life than ancient than the previous periods. So, in the field of literature there is also development in the writings of the Chinese people. The Chinese people, they wrote down about their history, about different inventions, the scientific inventions were also recorded. So, there are several changes found in the society, and that was the reflection of the scientific inventions of the Chinese people. So, here I am going to discuss about the literature, the science and technology and religion and also philosophy, how the Chinese people, they contributed to the human civilization of the world. So, when we are going to discuss about the system of writing, the Chinese people, they had invented writing system. Their writing system was totally different from the writing system of other parts of the world. Like the Egyptians, they had also narrated down about their history, they had written down about their society, their politics, their religion, their philosophy. So, everything is written by the Chinese people. So, how the Chinese people, they developed the system of writing. So, historians are of the opinion that most probably during the time of Shang rule, the Chinese, they developed the system of writing. First of all, they draw pictures in order to express their views, their thinking. They wanted to communicate with other people what was going on their mind, and they are thinking, their ideas, their ideologies, they were expressed through the pictures, but that was not possible to express everything in the form of pictures. So, that converted into pictogram, then the symbols were used for the pictures, those were known as pictograms. Then the ideas were amalgamated into that
picture or that symbols, that is ideogram, then the sound was also then used for the symbols that are known as the phonograms. So, historians are of the opinion that most probably during the time of Shang rule, the Chinese developed the system of writing through pictorial scripts. To give expressions to their feelings and sounds, they drew small pictures simplified into symbols called pictogram, then symbols standing for ideas called ideogram, and symbols representing sound called phonogram. So, thus for expressing a thing, a long difficult process was followed. At one point of time, the number of symbols had exceeded 55,000 in their writing process. So, later on the number was limited to 4,000. So, there are so many symbols used by the Chinese people in order to express their thinking. They wanted to communicate with each other. The Chinese people, they wrote down in the bamboo slides, and also they used the bones as their writing material. Then the pointed small bamboo sticks were used as pens, and later they used the camel's hair as the brush, and they used silk material as paper. They developed their writing system. In this way, they invented the system of writing. Their system of writing, it is existing till today. So, their writing system is totally different from the writing system of other parts of the world, and they have never they invented syllables, or sorry, alphabets, not syllables, it alphabets. Their writing is totally different from the other parts of the world. So, the Chinese failed to develop alphabets. The Chinese people used small and pointed bamboo sticks as pens. They had also prepared some color liquid to be used as ink. ताहले पिला माने आमे आज क्लास रे आलोचना करूछे जे किपरि भाबरे चीन रे जो लिपि बा समान ताकर मनर भाव को व्यक्त करबा पई किपरि भाबरे लेखार से माने लेखा आरंभ कले, हाउ दे स्टार्टेड राइटिंग, से माने किपरि भाबरे सब जिनिस को लिपिबद्ध करी रखिले. They noted down everything, their society, their polity, religion, scientific inventions, about the religious system, everything was narrated by the writers during the ancient period. तो पूर्व रे से माने किपरि भाव ताको लेखि रखुथिले. तो से लेखिबा पई से माने हाड़ व्यवहार करुथिले बा बाउंस को पतला पतला काटी ताको there's very thin slices were used as paper. से माने ऊपर तळ को सीरियल करी लेखुथिले एवं से लेखा माध्यम रे तांकर मनर भावना को व्यक्त करले. प्रथमे लेखिबा पई से माने छवि लिपि व्यवहार करुथिले. तो से छवि से मानकर मन को जहाँ आसुथिला ताको से माने चित्र आकार रे परिप्रकाश करुथिले. तो से चित्र को से माने प्रतीक भाव व्यवहार कले एवं से प्रतीक को धीरे धीरे से तांकर भाव तांकर चिंताधारा सहित ताको से सिंबल को से माने प्रतीक को से व्यवहार कर देन ताको ध्वनि सहित सहित मिश्रण करा गला, जहाँ फल कि से माने 55,000 टाइप ऑफ सिंबल्स वर यूज्ड बाय. लेटर इट वाज डिक्रीज टू 4,000. तापर 4,000 को से माने ताहा कमे दितले से सिंबल बा प्रतीक को. सो से माने तांकर मनर भावना को व्यक्त करबा पई जो लिपि से माने व्यवहार करूथिले बा व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द विश्व रे अन्य मानकर लेखिबा प्रणाली थारो चीन अधिवासींकर लेखिबा प्रणाली संपूर्ण भिन्न था, जहा कि आज पर्यंत ताहाको से माने प्रैक्टिस करी चली छंती. So they had also prepared some color liquid to be used as ink. Around 3rd century BC, they prepared brushes for drawing pictures. Camel's hair brush was used, and around the close of the 1st century AD, the Chinese invented paper. The चीन अधिवासी सारा विश्व को जो अवदान देइछंती सेथि मध्यरु कागज बा पेपर इन्वेंशन ताहा विश्व पाई एक बहुत बड़ अवदान. चीन अधिवासी मानकर अवदान मध्यरे जो पेपर इन्वेंशन करा गला ताहा हेउची विश्व को श्रेष्ठ अवदान. Then around the close of the 1st century, the Chinese invented paper. The first paper on the earth was prepared by the Chinese in the year 105 AD. The paper was prepared by pounding the barks of trees, torn clothes, old rags and various other things into a thick liquid and spreading the same over on plain surface. After being dried, the paper became ready for writing.
तो विश्व रे कागज उद्भावन करिबारे चीनवासी प्रथम थिले से माने छिंडा लुगा विभिन्न प्रकार गछर बकल सब आनी ताको सब से माने ता गुंड करी तरल लिक्विड प्रस्तुत करुथिले एवं ताहाकू प्लेन सरफेस समतल माने ढाली दले एवं ता सुखी गला परे कागज भाबरे व्यवहृत हेउथिला. So the invention of paper was a great contribution of the Chinese people. Later on, the Arabians learned the art of making paper from the Chinese people. This is how the knowledge of paper making spread to other regions. तापरे एहा विश्व रे अन्य सब स्थान को धीरे धीरे स्प्रेड करिथिला किपरि भाबरे कागज को प्रस्तुत करा जिवो. So the Chinese people, they had invented the paper. It's a great contribution of the Chinese people. ताले चीन वैज्ञानिक पद्धति रे विभिन्न जिनिस को उद्भावन करिछि सेथि मध्यरु कागज अन्यतम. तो कागज उद्भावन फल रे सेमानकर साहित्य सृष्टि करि परिले. They wrote down different literary the different conditions of their China like politics, economy, religion, philosophy and stories, novels, poetry. Everything was written down by the literary persons in order to save those ideas, those ideologies in the form of writing. से माने तांको भितरे जहा चिंता आसुथिला बा जहा धारणा सृष्टि होथिला ताको सब से माने लिपिबद्ध करी रखुथिले एवं परवर्ती समय ताहाको से माने पुनः ताको व्यवहार करबे जोटे कि साहित्य कला जो साहित्य कृतिर सृष्टि हैला ताहा केवल ए लेखिबा पद्धति ड्यू टू द invention of the system of writing there was the writing system led to the literary activities बा लेखिबा पद्धति से माने उद्भावन करिबारु साहित्यर सृष्टि हैला. That was due to the invention of the system of writing. The literary activities were started by the literary persons. So those literary persons, they had written about the scientific inventions etc. So the invention of system of writing and writing materials naturally gave impetus for the growth of literature. So large number of books on a variety of subjects were written on bamboo and wooden slips. तो bamboo slip रे बा कोन काठ wooden slip रे से माने सब लेखिबा आरंभ कले. तो जहा को कि से माने पुस्तक आकार रे संग्रहित करी रखुथिले. they but Shi Huangdi, who was the first emperor of China, he destroyed a large number of books. से जेहेतु चीन रा प्रथम सम्राट थिले तांकर मत थिला तांको समय रे ही सब किछि प्रथम आरंभ होबो. तो सेथि पई से बहुत लेखा को नष्ट कर देथिले. He destroyed a large number of books because he had a fancy that everything will be start from his period. But literature was revived again during the Tang rule. The Tang राजवंश जो शासन कलबा टांग मानक शासन समय रे पुनर्बार साहित्यिक कृति बा साहित्य रो पुनरुद्धार हैला. But that was revived again. So most famous of the Chinese books are the 5 classics. The 5 classics, the Song of the Old Farmer, the Song of the Felicitous Cloud. These are the important literary activities of the ancient Chinese people. The चीन रो लोक माने बा चीन रो साहित्यिक माने से माने विभिन्न पुस्तक सब रचना कर जहा कि धर्म ऊपर पर्यवेसित थिला, नैतिक ज्ञान ऊपर पर्यवेसित थिला, राजनीति क्षेत्र रे पर्यवेसित थिला एवं समाज रे हेउथा विभिन्न परिवर्तन ताको मध्ये से माने लिपिबद्ध करी रखुथिले. So there are so many books were written during the ancient period. जदियो बहु पुस्तक सी हुआंगती समय नष्ट होता तथापि किछि पुस्तक से माने जो जहा कि मेडिसिन ऊपर थिला, एस्ट्रोनॉमी ऊपर थिला, से सब पुस्तक से माने रखिथिले ताको नष्ट करना थिले. Those books which were based on science, astronomy and on different agricultural science, कृषि भित्तिक विज्ञान ऊपर पर्यवेसित से सब पुस्तक को से माने नष्ट न करी ताको रखिथिले. So during the 1st century BC, they wrote the first ever history of China. चीन रो इतिहास प्रथम 1st century BC रे ही लेखा आरंभ होइथिला. And Suma Chin, he is called as the Herodotus of China. जेहेतु से चीन रो इतिहास लेखिबारे तांकर बहुत अवदान रहिछि सुमा चीन कर. सुमा चीन को चीन रो हेरोडोटस बोली कहा जाए. He published the ancient Chinese history in 5 volumes. सुमा चीन को कौन पे कहा जाए
Herodotus, Chin Herodotus, because he had written about the history of China. Se Chin itihas bisayare ullekha karchan, and he published the ancient Chinese history in 5 volumes, 5 volume re se tahaku prakashana karchan. The first volume deals with the life of the Chinese emperors, Chin ra samrat manankara जीवनी को नहीं तांकर प्रथम वॉल्यूम पर्यवेसित थिला. सो सेकेंड वॉल्यूम इनक्लूड्स द डायरेक्शन टू डिटरमिन द टाइमिंग एंड क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स. तो प्रत्येक घटनार समय एवं यार विभिन्न पर्याय विषय आलोचना करा जाए जार कि जहाँकि से घटनार ऑथेंटिसिटी विषय बहुत सूचना प्रदान करता है. सो क्रोनोलॉजी प्लेज ए वाइटल रोल इन हिस्ट्री राइटिंग. जितेबाला आम इतिहास लिखुचु कौन सी घटनार समय एवं तार क्रोनोलॉजी टाइमिंग एंड chronology it plays a vital role in writing history. Suma Jin, he had described many events of history and he had given the timing of that event and also the chronology of that event. The second volume that includes the direction to determine the timing and chronology of events in ancient China. Then the third volume consists of social rites, religious customs, astrology and political ideals. The third volume बा तृतीय वॉल्यूम रे चीन अधिवासी माने जो प्रथा परंपरा सब पालन करुले दे सामाजिक जीवन तक जो कार्यकलाप से प्रतिदिन से फॉलो करुले दोज राइट्स सोशल राइट्स देन एस्ट्रोलॉजी देन रिलीजियस कस्टम्स से मानकर जो धार्मिक भावना थिला बा जो धार्मिक परंपरा थिला से सब को मध्य से उल्लेख करिसेंती. देन राजनैतिक चिंताधारा से समय लोक मानकर किपरि थिला बा की प्रकार शासन थिला चीन रे से सब विषय मध्य आलोचना कराइछि. इन द थर्ड वॉल्यूम सुमा चीन he had described about the social rights, astrology, then religious customs and political ideals. Then fourth volume, the fourth volume provides information on feudal lords and zamindars. During ancient period, there are so many feudal lords that ruled over China and there are many feudal states that established their rule, and during that period there was the development of agriculture and also there was the development of trade and commerce activities. So, the fourth volume provides a lot of information about the feudal lords and zamindars. The zamindars, they provided the administration which was a timely need during that period and it established a good administrative system in China. The Chinese people also developed their social activities, they had developed their knowledge in the field of science etc. due to their economic prosperity. So, this fourth volume provides a lot of information regarding the feudal government of China. Then the fifth volume, it also rests on the events of the last 3000 years. It also provides every information about the political developments, political upheavals of China during that period, about the religious activities, about the social customs, everything was narrated in the fifth volume of the last 3000 years. Juma was another prominent historian while Han Yu was an essayist. So, these two important persons, they had also described about the history of China. They had described about the polity, economy, society, religion, philosophy, everything, cultural developments, their literary activities during ancient Chinese period. ताले आमे जो साहित्य देखले साहित्यर विकास है चीन रे से चीन रा साहित्य कृति रो आमे चीन रा इतिहास विषय रे जानि थाउ. तो बहुत साहित्यिक माने सही समय रा सामाजिक व्यवस्था से मानकर धार्मिक मनोभाव से मानकर अर्थनैतिक प्रगति अभिवृद्धि सामंत मानक शासन जमींदारी शासन प्रत्येक विषय रे लिपिबद्ध करछन. तो इतिहास लेखिबा चीन रे मध्य आरंभ होइल. तो चीन रे जेहेतु सुमा चीन कर अवदान इतिहास लेखारे बहुत रही से सुमा चीन को चीन रो हेरोडोटस कहा जाए. जेहेतु ग्रीक ऐतिहासिक हेरोडोटस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री. हेरोडोटस को जेहेतु इतिहास जनक कहा जाए जेहेतु से ग्रीक इतिहास उल्लेख करछन्ती एवं तांकर लेखारु मध्य
बहुत तथ्य सब मिली थाए सो दैट द सुमा चीन कर ऐतिहासिक लेखा रु मध्य बहुत तथ्य मिली थाए सेथि पई सुमा चीन को इतिहास रे चीन र हेरोडोटस भाव रे नामित करा जाय छै द रिनाउंड पोएट्स ऑफ चाइनीज लिटरेचर वेयर ली पो एंड तू फू तो चीन र साहित्य क्षेत्र रे ली पो एवं तू फू एमानकर मध्य भूमिका गुरुत्वपूर्ण एमान तांकर विभिन्न राइटिंग माध्यम बा पोएट तांकर जो पोएम सब रचना करथिले बा जे सब कविता सब रचना करथिले सेथिरे बहुत तांकर भाव प्रवणता मध्य प्रकाश पाई से मानक भितर थिबा चिंताधारा तांकर लेखारे प्रतिफलित होईछि सो द फेमस पोएम ऑफ ली पो द मेड ऑफ ऊ इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड इमोशन चीन रो अधिवासी मानकर तांकर भाव प्रवणता तांकर विभिन्न प्रकार भाव प्रेम ठू आरंभ करी प्रत्येक इमोशन and different types of emotions they are reflected in the poems of the poets of ancient China. Tu Fu was more inclined towards romanticism, for which he is compared with the famous poet of English literature John Keats. तो Tu Fu को John Keats का सहित तुलना करा जाय because he had written the poems which reflects रोमांटिसिज्म तो तांकर लेखा माध्यम रे से माने विभिन्न प्रकार से मानकर भाव को व्यक्त करि पारुथिले द राइटिंग्स ऑफ डिफरेंट पोएट्स दे हैड रिफ्लेक्टेड द टीथ एंड कंडीशन ऑफ द सोसाइटी द आइडियाज ऑफ द पीपल देयर इमोशंस everything is reflected in their writings in the poems so that they had also given a lot of historical informations through their writings तांकर लेखा माध्यम रे विभिन्न प्रकार ऐतिहासिक विवरणी से माने प्रदान करिसेंती तांकर साहित्य माध्यम रे हो तांकर काव्य कविता माध्यम रे हो तो जेउ थरो कि हमें चीन रो इतिहास विषय रे बहुत तथ्य पाई थाउ सो then Po Chao was another famous poet of the time who was also the governor of Hangzhou state. Hangzhou राज्यर जे गवर्नर थिले से मध्य जने बहुत बड़ा कवि थिले. He was also a very famous poet and he had written about the beauty of China, the Chinese, the emotions of Chinese people that is reflected in his writing. तांकर लेखार मध्य विभिन्न प्रकार भाव प्रवणता सब प्रकाश पाइछि. So the literature it also provides a lot of information regarding the emotional development of the people of China, the emotions of the people of China, their writings and one of the most important poet Tu Fu, he is compared with John Keats because his writing reflected romanticism. So that is his writing was very modern in nature during the ancient period. The outstanding novelist Shao Chan had published his immortal novel Hong Lo Meng in 24 volumes. तो जने Shao Chan जे कि जने महान नोवेलिस्ट थिले से बहुत नोवेल लिखिचंती had published his immortal novel Hong Lo Meng in 24 volumes which is known as the dream of the red chamber in English. English से तार अर्थ होची ड्रीम ऑफ द रेड चैम्बर. सो हिज अदर नॉवेल्स आर लियाओ चाय ची और पिकुलियर स्टोरीज. लियाओ चाय ची र अर्थ होची पिकुलियर स्टोरीज. सान क्यो ची येन और स्टोरी ऑफ 3 states. These novels depict the contemporary society in a lucid manner. जदि आमी माने चीन रो सामाजिक व्यवस्था विषय आलोचना करते बा सामाजिक तांकर सामाजिक व्यवस्था किपरि थिला हाउ द सोसाइटी वाज इन एंशिएंट चाइना देन दीस 2 novels provides us a lot of information. ए जो दुईटी नोवेल लियाओ चाय ची एवं सान क्यो चियेन ए दुई नोवेल चीन रो सामाजिक व्यवस्था विषय रे बहुत तथ्य प्रदान करि थाए. ताले साहित्य मध्य चीन रो इतिहास को समृद्ध करिछि बा चीन रो इतिहास को चीन रो साहित्य
तार ऐतिहासिक बरणी प्रदान करिछि एवं सारा विश्व को चीन रो अवदान हेउछि जेहेतु सेमानकर साहित्य क्षेत्र रे अधिक ज्ञान थिला एवं सेमाने विभिन्न प्रकार भाव को व्यक्त करि पारथिले साहित्य माध्यम रे एवं साहित्य माध्यम ताकर इतिहास मध्य रचना करिथिले. सो लिटरेरी एक्टिविटीज प्रोवाइड्स अस अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एंशिएंट चाइना. The writings of Confucius and Lao Tse, the two eminent philosophers and preachers of ancient China, also have enriched the Chinese literature. जदि आमे कहिबा चीन रो साहित्य क्षेत्र रे आउ दुई महान दार्शनिक लाओ से एवं कन्फ्यूशियस सेमानकर मध्य बहुत अवदान रहिछि. They had narrated about the moral life of the Chinese people, how they wanted to get to bring reforms in the society in order to make the life of the Chinese people better, and they also wanted to reform the administrative system through their writings. तो सेमाने कन्फ्यूशियस एवं लाओ से चीन रो समाज रे एवं धर्म क्षेत्र रे अनेक परिवर्तन आनिबा को चाहथिले, संस्कार आनिबा को चाहथिले. सेमाने चाहुथिले जे चीन अधिवासी मानक भितरे कोनोसी परिवर्तन एवं सेमाने तांकर ओल्ड कस्टम ओल्ड जहाँ प्रैक्टिस अच्छी बा सेमानकर पुराना प्रथा परंपरा सब को सेमाने प्रैक्टिस करंतु जहाँ फल के चीन रे एक सुस्थ समाज गठन करा जाई परिबो. चीन रे एक चीन लोक माने नैतिक जीवन यापन करिबा पई सेमाने तांकर लेखा माध्यम मध्य उपदेश दैछंती. सेमाने शासन क्षेत्र रे करप्शन को दूर करिबा पई मध्य तांकर लेखा रे विभिन्न लेखा माध्यम प्रकाश करिसंती. जेहेतु सही समय रे करप्शन बहुत रही थिला चीन समाज रे, तो से ताकू मध्य दूर करिबा पई विभिन्न प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करिथिले. तो सही समय रा सामाजिक व्यवस्था रे एवं धार्मिक व्यवस्था रे सेमाने संस्कार आनिबा पई, but they wanted to introduce several reforms in the field of administration and also in the field of religion, so that the people will live a very moral life, they will lead a better life than than the previous period. So most of these books are preserved in the Imperial Library of China. तो जिते सब पुस्तक रचना कर धर्म को आधार करी हेउ, राजनीति को आधार करी हेउ, समाज को आधार करी हेउ, अर्थनीति को आधार सब किछि पुस्तक को से माने तांको चीन इंपेरियल लाइब्रेरी रे गच्छित रखिछंती. सो द चाइनीज पीपल आल्सो प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट बुक ऑन वार स्ट्रेटेजी. वार स्ट्रेटेजी ऊपर मध्य चीन रो लोक माने पुस्तक रचना करथिले. सो दे हैड आल्सो रिटन ऑन डिफरेंट स्ट्रेटेजीज ऑफ वॉर. द राइटर ऑफ द ग्रेट वर्क वाज सुनजू. सुनजू हेउचंती जने महान लेखक जे कि युद्ध किपरि करा जाय पर युद्ध विभिन्न स्ट्रेटेजी विषय से आलोचना से पुस्तक रचना करिसंती. दे आल्सो रोट बुक्स ऑन मेडिसिन, म्यूजिक एंड रिलीजन. दे हैड आल्सो रोट एनसाइक्लोपीडिया. से माने मध्य चीन अधिवासी माने प्रत्येक क्षेत्र तांकर ज्ञान से माने प्रदर्शन करिसन. दे हैड नॉलेज इन एवरी स्फीयर, इन म्यूजिक, इन मेडिसिन एंड आल्सो इन द फिलोसॉफी आल्सो. से माने मध्य दर्शन शास्त्र में तांकर अगाध पांडित्य थिला. तो चीन अधिवासी माने तांकर समाज को से माने अधिक विकासोन्मुखी करि पारिथिले ड्यू टू देयर डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड आल्सो इन द फील्ड ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट एंड नॉलेज. ताले चीन अधिवासी मानकर दर्शन शास्त्र अगाध पांडित्य थिला. विज्ञान रे मध्य से माने तांकर पारदर्शिता प्रदर्शन करथिले. से माने समाज में उत्तम समाज गठन करि पारिथिले. राजनीतिक क्षेत्र में तांकर साफल्य परिदर्शित होईछि एवं अर्थनीति विकास रे मध्य से माने तांकर प्रत्येक क्षेत्र रे तांकर उत्कर्षता प्रतिपादित करिसंती. Then we will discuss about the art and architecture. The Chinese people, they had also developed their art and architecture. से मानकर कला स्थापत्यर मध्य विकास घटिथिला. चीन अधिवासी मानकर कला क्षेत्र रे कला स्थापत्य क्षेत्र रे एक बड़ अवदान रही. ताहा हैला द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जोटा कि प्रीवियस क्लास रे ऑलरेडी कहिसे जे हाउ दे हैड बिल्ट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. चीन रो बृहत प्राचीर विश्वर सप्ताश्चर्य मध्य एक आश्चर्य.
वर्तमान मध्य से great wall of China, that also this is also the reflection of their excellence in the field of art and architecture. कला स्थापत्य क्षेत्र रे तांकर जो कला नैपुण्यता ताहा प्रदर्शित होईछि ताहार निदर्शन हेउछि चीन रो बृहत प्राचीर, which is still an object of awe in 21st century. वर्तमान रो एकविंश शताब्दी मध्य यह एक आश्चर्य. After the spread of Buddhism, the Chinese constructed Buddhist temples or pagodas made of wood, stone and bricks. Among them, Jade Pagoda in Peking and Pagoda in the Summer Palace are really praiseworthy. जिते बड़े बौद्ध धर्मर प्रसार है भारत रे, बौद्ध धर्मर विकास है, बौद्ध धर्म सृष्टि है भारत रे, इंडिया वाज द इट इज द लैंड ऑफ बुद्धिज्म. जदि सारा विश्व रे मिशनरी रिलीजन कोठी आरंभ होता है ताहा है भारत. भारत रो ही प्रथमे मिशनरी रिलीजन सारा विश्व रे आरंभ होइथिला जते बेले ख्रीष्टपूर्व 600 रे गौतम बुद्ध एवं महावीर जिन से माने धर्म क्षेत्र रे एवं समाज रे विभिन्न संस्कार आनी थिले. दे स्प्रेड द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इन द वर्ल्ड. सारा विश्व रे से माने शांतिर वार्ता प्रचार करिथिले. दे प्रोपागेटेड अबाउट नॉन वायलेंस, अहिंसार वार्ता प्रचार करिथिले. त सत्य अहिंसा रो प्रचार पाई से माने विभिन्न तांको धर्मावलंबी बौद्ध धर्मावलंबी माने विभिन्न स्थान को यात्रा करले एवं विभिन्न विश्वर विभिन्न कोण रे जाई धर्म बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करथिले. त चीन रे मध्य बौद्ध धर्मर प्रसार होइतिला. जते बेले चीन रे बौद्ध धर्म प्रसार हैला, दे द रियल मेसेज ऑफ बुद्धिज्म इज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस and to love all people. So the Chinese they embraced Buddhism, se mane बौद्ध धर्म ग्रहण कले, and they also wanted to establish peace and security in their country. तांको देश रे शांति स्थापन करिबा पई लोक मानक भितरे सत्य अहिंसा और वृद्धि करिबा पई से माने मध्य विभिन्न बौद्ध मंदिर सब निर्माण कले. पागोडा जहाँ को आम कहे पागोडा बुद्धिस्ट जहाँ कि बहुत तल विशिष्ट थिला, से पागोडा निर्माण तांकर होची कला स्थापत्यर एक उत्कृष्ट निदर्शन. दैट सो द पागोडाज रिफ्लेक्ट्स द आर्टिस्टिक स्किल ऑफ द चाइनीज पीपल, their excellence in the field of art and architecture. After the spread of Buddhism, the Chinese constructed Buddhist temples or pagodas which are made of wood, then stone and bricks. So they used different materials. Wood was used for building pagodas and stone was also used, then bricks were used. So among these pagodas, Jade Pagoda in Peking, Peking रे थिबा Jade Pagoda एवं Summer Palace रे थिबा pagoda ताहा हेउची प्रशंसा योग्य. These are the two important pagodas which reflects the artistic skill of the Chinese people, that show their excellence in the field of art and architecture. Then Changun and Loyang cities had attractive architectural monuments. The कला स्थापत्य कहले से माने बहुत बिल्डिंग सब निर्माण करथिले, राजप्रासाद हेउ कि विभिन्न प्रकार गृह सब हेउ बहुत तल विशिष्ट गृह मंदिर पागोडा ए सब तांकर कला स्थापत्य को निदर्शन बा कला स्थापत्य निदर्शन होइछि. तो then we will discuss about the sculpture and painting. The archaeological remains of several tombs and buildings excavated from Santong province point at high standard of Chinese sculpture. तो चीन अधिवासी मध्य कला स्थापत्य रे तांकर अगाध पांडित्य थिला, स्थापत्य क्षेत्र रे मध्य से मानकर अवदान अतुलनीय. They had built several images, they had built different their sculptural activities are reflected in the in many pictures like birds, animals, different war scenes, then different social activities which are shown in the walls. विभिन्न टेम्पल वॉल रे से माने तांकर सब स्थापत्य निदर्शन सब छाड़ी जाइछंती, जहा कि होछि विभिन्न प्रकार युद्धर चित्र, विभिन्न सामाजिक कार्यकलापर चित्र, पशु पक्षी मानकर चित्र. So they had shown their excellence in the field of sculpture in these sculptural activities in the temple walls. And the pictures on bronze pots, drinking jugs
and musical instruments stand as brilliant proof of Chinese sculptural designs. तो चीन अधिवासी माने जो स्थापत्य जो कला प्रदर्शन कर स्थापत्य क्षेत्र में ताहा सबू जो ब्रोंज विभिन्न प्रकार व्यवहार करते पात्र सबू द ब्रोंज पॉट्स देन द ड्रिंकिंग जग्स से माने पानी जो यूज करते पानी द्रव्य भाव में ड्रिंक पानी जहाँ ड्रिंकिंग जग कह जाऊला से जग्रे विभिन्न प्रकार से माने पेंटिंग करुथिले एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सब विभिन्न प्रकार चित्र से अंकन करुथिले सो ताहा तांकर स्कल्पचर डिजाइन सब प्रदर्शित करथिला देन द फेमस टांग एम्परर मिंग हुएंग वाज ए ग्रेट पैटर्न ऑफ पेंटिंग चित्रकला क्षेत्र में चीन अधिवासी मानकर अगाध पांडित थिला से विभिन्न प्रकार रंग व्यवहार करुथिले चित्रकला पई एवं से चित्रकला अधिक उच्च कोटिर थिला they had painted the pictures of birds animals and also different scenes विभिन्न प्रकार दृश्य से माने चित्र करते विभिन्न प्रकार नेचुरल एलिमेंट्स जहाँ कि प्राकृतिक दृश्य ताकू मध्य से माने चित्र रे अंकन करते दे showed their excellence in the field of painting also चित्रकला मध्य से माने तांकर पारदर्शिता प्रदर्शन करछंती जहाँ कि अतीत रे बा चीन रो इतिहास रे से मानकू विश्व को तांकर अवदान रही से चित्रकला क्षेत्र में अवदान रही द आउटस्टैंडिंग पेंटर्स ऑफ द टाइम वे वांग सी ची क्यो काई ची एंड क्योसी सो क्योसी क्यो काई ची एवं वांग सी ची दे वर द इम्पोर्टेंट पेंटर्स और आउटस्टैंडिंग पेंटर्स ऑफ एंशिएंट चाइना चीन रो अतीत चीन जो सब पिक्चर जो पेंटिंग सब करा जाउथिला चित्रकला से भूमिका अतुलनीय देन इन द फील्ड ऑफ साइंस व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ चाइनीज पीपल इन द फील्ड ऑफ साइंस विज्ञान क्षेत्र में चीन अधिवासी मानकर अवदान कौन रही सो बाय 6th century BC द चाइनीज हैड प्रिपेयर्ड अ लूनर कैलेंडर से माने चंद्रंकर गतिविधि को लक्ष्य चंद्र वृद्धि एवं तार ह्रास अनुजाई से माने कैलेंडर निर्माण करथिले से माने कैलेंडर प्रस्तुत करथिले ईच मंथ वाज ऑफ 29 to 30 days प्रत्येक मास 29 दिन किंबा 30 दिन रहउथिला बट द ईयर वाज 365 and a quarter days they knew about solar and lunar eclipses से माने सूर्य पराग चंद्र ग्रहण सब से जानिथिले से माने समय मध्ये जानि पारुथिले दे यूज्ड सन डायल एंड वाटर क्लॉक इन ऑर्डर टू नो द टाइम से माने समय जानिबा पई वाटर क्लॉक मध्ये बा जल घड़ी व्यवहार करुथिले एवं से माने दिन रे सूर्य घड़ी मध्ये व्यवहार करथिले इन ऑर्डर टू नो द टाइम सो दे न्यू द यूज ऑफ आयरन दे हैड आल्सो नॉलेज इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी सब विज्ञान क्षेत्र में मध्य तांकर पारदर्शिता रहिथिला से माने विभिन्न प्रकार धातुर व्यवहार जानिथिले दे न्यू अबाउट द यूज ऑफ ब्रोंज दे न्यू द यूज ऑफ आयरन बा लौहर व्यवहार जानिथिले ब्रोंज व्यवहार जानिथिले विभिन्न धातु विषय तांकर ज्ञान थिला as they had the knowledge about iron they had also the knowledge about the magnet से माने चुंबक विषय मध्य तांको नॉलेज रहिथिला they had also knowledge about the magnet so due to that knowledge से मानको से मैग्नेट विषय नॉलेज थिबारु बा लौह विषय नॉलेज थिबारु से माने मेरिनर्स कंपास को निर्माण करिबा सक्षम होतिले so that with the help of the magnets they had prepared a type of mariners compass चीन अधिवासी माने विश्व को आउ गोटे बड़ अवदान देले ताहा थिला मेरिनर्स कंपास जेते बेले वर्षा हेउथिला झड़ तूफान हेउथिला जेहेतु से माने बणिक थिले they went to different far off places in order to establish trade relations with other foreign countries they faced a lot of problem during those stormy nights तो से जो झड़ बतास राति रे तांको बहुत असुविधार सम्मुखीन होबा पड़ुथिला so in order to know about the direction to know about the time से माने को दिगरे गति करछन जानि पारु नथिले so in order to know about the direction to know about the the direction the times they had invented several scientific instruments से माने ये जो वैज्ञानिक पद्धति रे मेरिनर्स कंपास को उद्भावन कले कि माने को दिगरे जाउछन जानिबा पई से जो झड़ तूफान राति रे
से जहाँकि कहुए अभाव ही उद्भावनर जननी तो जिते कौन प्रॉब्लम आसे से प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने नूतन नूतन उद्भावन सब होता है सो दैट द मेरिनस कंपास सॉल्व देयर प्रॉब्लम as they were the great traders. Chinese people are very good traders. से माने बहुत भल बणिक थिले से विभिन्न राष्ट्र सहित वाणिज्य व्यवस्था वाणिज्य प्रतिष्ठा करि पारिथिले विभिन्न राष्ट्र so with the help of magnets they had prepared a type of mariners compass. They first prepared the gunpowder to be used in firearms. से माने केवल सेति करने थिले जेहेतु से माने युद्धर विभिन्न स्ट्रैटेजी विषय जानिथिले they knew about different strategies of war. They had also invented the gunpowder to be used in firearms so that they could easily defeat their enemies. तांको शत्रु मानकु सहजरे परास्त करिबा पई से माने गन पाउडर जहा को हम फायर आर्म्स ताकु व्यवहार करिबा पई से माने ताकु मध्ये उद्भावन करिथिले so that they became very powerful. They had two important scientific inventions during that period. One was mariner's compass, another was the gunpowder, which was the reason of their success. सेमानक सफलतार मूल कारण थिला कोन से माने scientific invention करिथिले. Then the Chinese people also invented printing machine. This is another scientific invention which is very very important. आउ एक गुरुत्वपूर्ण उद्भावन थिला तांकर प्रिंटिंग मशीन जो समय कि विभिन्न पुस्तक सब लेखा गला से माने प्रथमे कौन कले लिपि उद्भावन कले साहित्य कृति सेमानकर आरंभ होला तापर सेमान ताकू विभिन्न प्रकार बांबू स्लिट बा वुड रे काठरे बाउंस रे विभिन्न हाड़ रे मध्य दे आल्सो यूज्ड बोन्स एज देयर राइटिंग मटेरियल तो सेमाने लेखुथिले तापर धीरे धीरे सेमाने सिल्क कपड़ा व्यवहार कले बस सिल्क वाज यूज्ड एज देयर पेपर देन दे डेवलप्ड पेपर तापर से माने कागज उद्भावन कले तो ये जो कागजर उद्भावन तापर तांकर अन्य एक गुरुत्वपूर्ण इन्वेंशन थिला वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेंशन वाज द प्रिंटिंग मशीन से माने कोन कले ना मुद्रण यंत्र ताकू मध्य से माने उद्भावन कले दे इन्वेंटेड द प्रिंटिंग मशीन दे हैड स्टार्टेड अ सिस्टम ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग सो नोटेड आर्कियोलॉजिस्ट सर ऑरेलस्टेन he had discovered the diamond sutra. The name of the book is the diamond sutra. गोटे पुस्तक सर ऑरेलस्टेन आविष्कार करथिले जे जने महान प्रत्नतत्वविद थिले. ही वाज अ ग्रेट नोटेड आर्कियोलॉजिस्ट. से एक गुंफारू फ्रॉम द केव ऑफ 1000 बुद्धस इन द सिटी ऑफ तुनहुआन which is regarded as the first printed book of the world. जहा को कि विश्वर सर्वप्रथम प्रिंटेड बुक भाव में ग्रहण करा जाइछि. So the Chinese were the first in inventing the printing machine and also in publishing the first book. So the first book of the world. What is the name of the book? The Diamond Sutra. The Diamond Sutra was the first printed book of the world. सारा विश्वर प्रथम printed book है the Diamond Sutra, which was discovered by Sir Orelstein from the cave of 1000 Buddhas in the city of Tunhuan. Then we will discuss about other inventions. Besides the invention of colored paper, black and red ink for printing and writing were other contributions of the Chinese people. अन्य सब उद्भावन है तांको से माने विभिन्न कलर रो पेपर सब इन्वेंशन कले. प्लेन पेपर तो प्रथम से माने व्यवहार करूथिले तापर से माने करना विभिन्न रंगीन कागज सब आसला बा कलर पेपर सब आसला. ब्लैक इंक रेड इंक जहा को प्रिंटिंग रे व्यवहार करा जाउथिला ताहा मध्य से माने व्यवहार कले. एंड द पीपल देयर अदर contributions of Chinese people. They had started type of encyclopedia. So माने encyclopedia मध्य लिखिबा आरंभ करबा they had knowledge in every sphere like religion, medicine, then social literature, literary activities, poems, then novels and the books on religion, philosophy. So प्रत्येक क्षेत्र रे तांकर ज्ञान रहिथिला. धर्म विषय ज्ञान थिला,
उपनिषद रे ज्ञान थिला, मेडिसिन रे ज्ञान थिला, विभिन्न चिकित्सा विज्ञान में अधिक ज्ञान से माने दे कुड क्योर सेवराल डिजीज, दे कुड डायग्नोस डिफरेंट डिजीजेस, से माने विभिन्न रोग रो कारण विषय जानि पारुथिले, तार निराकरण विषय मध्ये जानि पारुथिले. सो दे न्यू अबाउट डिफरेंट डिजीजेस, they could diagnose the diseases, they could cure those diseases. से माने विभिन्न रोगर कारण निराकरण करि पारथिले, अस्त्रोपचार पय माने एनास्थेसिया मध्ये व्यवहार करथिले. सो जेतबे आमे जो निश्चित कर दिया जाय ऑपरेशन समय रे ताको कि उद्भावन करथिले द चाइनीज पीपल. द यूज ऑफ एनास्थेसिया फॉर मेडिकल ऑपरेशंस, that was the contribution of Chinese people. त चीन रो लोक माने सारा विश्व को आगुट अवदान देइछंती, ताहला एनास्थेसिया किपरि भाबरे ऑपरेशन समय जंत्रणा को अनुभव न करिया पय निश्चित कर दिया जाय. से एनास्थेसिया चाइनीज मानकर हेउची अवदान. देन हाइड्रो पावर मिल, कोल और फ्यूल, व्हिच वर द प्रूफ्स ऑफ चाइनीज साइंटिफिक एडवांसमेंट. चीन रे विज्ञान को नहीं बा वैज्ञानिक माने नूतन नूतन उद्भावन सब करथिले, जहा कि तांको अधिक मॉडर्न देन एनी अदर सिविलाइजेशन. जेते सब सिविलाइजेशन थिला, सब सभ्यता मध्य चीन सभ्यता तर साइंटिफिक इन्वेंशन माध्यम रे प्रिंटिंग मशीन, गन पाउडर, सो देयर सो देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस, एनास्थेसिया, these were the contributions of Chinese people to the whole world. सारा विश्व को चीन रो एहा हेउची अवदान विज्ञान क्षेत्र रे. Then we will discuss about the practical arts. The Chinese had the knowledge of making glasses around 2nd century BC. ख्रीष्टपूर्व 200 बेलू चाइनार लोक मैंने माने काचर विभिन्न प्रकार उपकरण सब निर्माण कर. दे ऑल्सो they invented new utensils, they invented in the which were porcelain. The Chinese glasses and porcelain were very famous in European markets, European countries. And the Roman people, they are very fond of Chinese porcelain ware and the Chinese glasses. The Chinese silk had also great market in Europe. China ro silk बहुत उत्तम मानर थिला. That was a very good, of a very good quality. Chinese silk was of a very good quality and it was demanded in Europe, and the Roman people, they loved it. They wanted to buy the Chinese silk. For the first time, the Chinese started the use of tea during the time of Han rule. आमे जो समस्ते चा को एक पानीय भाव में व्यवहार करूँ, तो से चा रो व्यवहार कोठु आसीची? चीन रो आसीची. चीनवासी होचंती प्रथम जो माने कि चा पीबा आरंभ करथिले. सो फॉर द फर्स्ट टाइम द चाइनीज स्टार्टेड द यूज ऑफ टी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हान रूल. जेतबे हान माने शासन करुथिले, हान राजवंश शासन करथिले, सेही समय रु चीन रे चार व्यवहार करा गला. हाई प्रोफिशिएंसी वाज अचीव्ड बाय द चाइनीज इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज. So then they also had knowledge about the making of bronze. They mixed the copper and tin alloys and they prepared bronze. So they had also knowledge in the field of metallurgy. Man धातव विज्ञान में बहुत धातव ज्ञान रे मतलब तांकर बहुत अगाध पंडित थिला. They had knowledge in metallurgy. They used the gold, silver, bronze articles in the daily life. Around 5th century BC, coins were in circulation in China. तो ख्रीष्टपूर्व 500 बेलू चीन रे मुद्रार व्यवहार बहु मात्रा रे करा जाउथिला. आज द चाइनीज पीपल आर द वेरी गुड ट्रेडर्स. से माने विभिन्न राष्ट्र सहित वाणिज्य संपर्क स्थापन करथिले. दे यूज्ड शिप्स, दे यूज्ड कैमेल्स. से माने विभिन्न प्रकार वाणिज्य संपर्क स्थापन करथे. दे यूज्ड और दे एस्टाब्लिश देयर ट्रेड रिलेशंस विथ फॉरेन कंट्रीज. विभिन्न वैदेशिक राष्ट्र सहित से माने वाणिज्य संपर्क प्रतिष्ठा करथिले. तो से वाणिज्यर विकास जो से माने मुद्रार मध्य व्यवहार बहुल मात्रा रे करथिले. दे आल्सो यूज्ड द कॉइन्स. Then religion and philosophy. The ancient religious belief of Chinese included the worship of ancestors, earth, sun, moon, stars, heaven and moreover nature. She was the earth god. तो से माने प्रकृतिर उपासक थिले एवं से मानकर पूर्व पुरुष माननको पूजा करुथिले. तो से मानकर एंसेस्टर मानको पूजा करिबा से माने प्रैक्टिस करिबा आरंभ करथिले. दे यूज्ड to respect their ancestors and they had the belief that their ancestors will save them. से माने
तांकर धारणा रखिथिले जे तांको पूर्वपुरुष माने तांको प्रत्येक क्षेत्र रे रक्षा करिवे तांको सहाय्य करिवे So the ancient religious belief of Chinese included the worship of ancestors, earth, sun, moon, stars, heaven and more over nature. So she was the earth god, Chi was the god of crops. तांकर जे शस्य देवता थिले से थिले Chi, she थिले तांकर earth god. Shangti was another famous god of the Chinese. In the 6th century BC, drastic change came in the field of religion. The religious reformers like Lao Tse and Confucius, they emerged in China, who changed the religious outlook of the Chinese by their रिफॉर्म्स तो सेमान को जो धार्मिक भावना थिला से बहुत बड़ा परिवर्तन आसथिला जहाँ पे कि कन्फ्यूशियस लाओ से माने विभिन्न संस्कार प्रचलन तो सो विल डिस्कस अबाउट कन्फ्यूशियस हिज पीरियड वाज फ्रॉम 551 BC to 479 BC कन्फ्यूशियस वाज बोर्न इन द ईयर 551 BC इन द स्टेट ऑफ लू प्रदेश रे 551 ख्रीष्टपूर्व कन्फ्यूशियस जन्म ग्रहण करथिले ही वाज ए कंटेम्पोररी ऑफ बुद्ध एंड ही वाज ए ग्रेट फिलोसोफर एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन He entered into the royal service as an official. Because of his efficiency, he became the chief justice of the state of Lu. When Confucius found the chief administrator was engaged in various immoral activities and he was a very corrupted person, he neglected his duties. He resigned from the post of chief justice and then for a long period of 14 years, he searched for a job. At that time, China was passing through the stage of feudalism. There were many feudal states who were ruling over China. And none of the rulers of any state was prepared to experiment with his ideas. Finally, at the age of 67, he returned to his motherland and established a school where he taught the pupils about politics and morality. He died at the age of 72 in the year 479 BC. Then we will discuss about the teachings of Confucius. His teachings have been reflected in 5 classics: the book of history, the book of poetry, the book of changes, book of spring and autumn and book of rites. Then teachings, what are the main teachings of Confucius? Character is the best wealth of man. A man should acquire good behavior, honesty, sincerity, politeness and modesty. The children and wives should pay respect to their parents and husbands. The rulers should govern their subjects like their own children. A man will be regarded as a coward if he does not perform the right deed, which he considers the right. He should perform that duty. What you don't like when done to yourself, do not do to others. The true duty of a state is to guide its subjects. It should punish the criminals and the people should have a fear about the government so that the people would lead a moral life. Then one should love all and maintain friendly relationship with equals. तो प्रत्येक लोक को समस्त भल पाइबा उचित एवं निजर समकक्ष लोक सहित बंधुता संपर्क रखिबा उचित. So one should pray and worship the ancestors. And then one should not appoint a man whom he distrusts. One should not change and regulate himself on the basis of old laws and practices. Everyone should earn fame by performing good deeds. He was called as an accomplished sage and an uncrowned king. से एपरिक राजा थिले जे कि uncrowned king. Then Lao Tse, who was born in 604 BC at Lixiang in Ku district of Chu kingdom. His earlier name was Li Er. He was famous as Lao Tse or the old master. He wrote a book entitled Tao Te King, which means the virtuous path. His teachings are known as Taoism. He is called as Buddha of China. तांको चीन रा बुद्ध कुहा जाए Lao Tse को, and for his deep philosophical knowledge he is regarded as the Plato of China. Then the teachings are the entire world rests on spiritual power. से आध्यात्मिकता पर विश्वास करुथिले. It is better to be detached from worldly affairs. One should lead a natural life. A man should lead noble and general life. Man should not be attracted towards power, wealth and position. One should lead a virtuous life. The life of man becomes perfect when one is adorned with the qualities like serving the mankind, true thinking, toleration, responsibility, etc. तो तांकर जेहेतु तांको चीन रो बुद्ध कुहा जाउतला, बुद्धंकर बाणी सहित तांको बाणी रो बहुत समानता रहिथिला, सेति पई तांको चीन रो बुद्ध कुहा जाउथिला. तो से सांसारिक संसार सहित वर्ल्ड अफेयर सहित बेसी अटैचमेंट रखा से मना करुथिले. एंड सब बड़े तांकर बाणी थिला किपरि भाबरे नैतिकतापूर्ण जीवन यापन करा जाई परिबो. देन मेंसियस वाज अनदर फिलोसोफर whose period was from 370 to 289 BC and he was a disciple of Confucius. तो एही महान दार्शनिक माने चीन समाज रे परिवर्तन आनिथिले एवं चीन धर्म क्षेत्र संस्कार आनिथिले.
So, we have already discussed about the contributions of Chinese people in the field of science, literature, religion and philosophy. So, thank you very much for attending this class.